Hello, 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 guys. Sorry, a little bit late, just for some कुछ वर्क्स थे जो करने थे, नहीं तो वो पेंडिंग रह जाते. सो इस वजह से आई एम लेट टुडे. बट हाँ, और एक दूसरी चीज़, बिकॉज क्या है कि बहुत ही जल्दी इफ्तारी का वक्त हो जाएगा. सो आई हैव टू बी क्विक टुडे. सो जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे, यू कैन आस्क मी. अदरवाइज हमेशा की तरह मैं बक करके बकने के बाद चला जाऊंगा. सो जितनी जल्दी हो सके जस्ट ज्वाइन ज्वाइन कर लो. तो देखते हैं. करेंटली आई एम इन द ट्रेड. मैं एक्चुअली आज मैंने दो ट्रेड लिया है. आई हैव टेकन टू ट्रेड्स on EU and GBP JPY as well. So on EU I've taken a loss, and GU it's still running, and hope it's not go towards the loss, at least for now. मतलब ना जाए तो बेहतर है, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. वी हैव टू रिएक्ट ना. वी डोंट हैव टू प्रेडिक्ट द मार्केट, वी जस्ट हैव टू react on it. So I'm doing that currently. Patiently I'm just waiting for next setup to occur. If not, I hope this trade go towards the TP that I am assuming of. ये ट्रेड मेरा ऑलमोस्ट 1 PM को, बिफोर आई एम लीविंग फॉर personal work, से पहले I have taken this. But the mistake that I did from this on EU trade is that analyze on the I analyze this on my phone. So that is the mistake that I did. So lesson learned: never analyze market on a phone if you are outside your home. Never do that. If I am in the position, I have to just manage that position. That's it. That is my मेन थिंग. और वो मैंने नहीं किया. डिड नॉट फॉलो दैट completely. So I have taken the loss जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, and I have taken it. So I'm trying to avoid it now. So just doing that. Hopefully this go towards the TP. Abhi there is no news. I mean, if we go first, we have to go to the our Discord actually. Discord में अभी मैं जस्ट रास्ते में था. आई एम टॉकिंग विद मस्कुलाइन एफेक्ट्स. उनसे बात कर रहा था. आई एम एक्सप्लेनिंग वट एवर यू आर गोइंग थ्रू एंड वट यू आस्क मी. सो you guys also can join this Discord community, because I am 24/7 available here on live. I'm available every day, but on my Discord I'm available 24/7. So you can ask me anything. You can see your chart. You can post your charts. We both can analyze together. और डेली फोरकास्ट तो मैं इस कम्युनिटी में पोस्ट करता ही हूँ, बिकॉज वो मेरी एट मोस्ट ड्यूटी है, जो मैं एटलीस्ट नहीं भी बोले तो मैं 1 1.5 साल से तो करता हुआ आ रहा हूँ. जब मेरे कम्युनिटी में 4 पर्सन भी थे, तब से मैं कर रहा हूँ. तो ये तो एक हैबिट है. सो वो मैं करता हूँ जस्ट टू मैं भी जो देख रहा हूँ वो आप एट द सेम टाइम यू कैन वॉच इट. सो ये मेरा है. तो EU में I was confused right now because that time during the session, so I have not decided anything on EU. But GBP JPY, I was confident enough to take the trade. But what mistake that I did is that this is H1 H4 stack to H1. But as you know, price did not tap to H4, but it tapped to H1. So I've taken the trade on H1 itself only. So that is the mistake I did. I'm learn the lesson from that trade as well.
So currently I'm in a good position, but hope for it go towards the TP, not towards the SL. So let's hope. एंड यहाँ पर करंटली अगर ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे, bearish then so currently internally it's bullish and price come towards the EQ of the swing range. So now what I can assume that what can happen after mitigation of this POI, it can dump downside, because what H4 is suggesting us that अगर आप देखो H4 swing is bullish, internally is bearish, and it did a very small, very small internal pullback. मतलब जब भी ऐसे internal small pullback होते हैं ना, तो it remind us that कि अभी शायद से सेलर उतने स्ट्रांग नहीं है इस केस में। तो जब भी पुल बैक बहुत छोटे छोटे बनेंगे, तो ये एक साइन है, दैट साइन ऑफ अ रिवर्सल, आई गेस नहीं, आई एम श्योर. So I can use this as this H4, I can use this as my sell entry. But as you know, this POI is too big, so I need a very hefty confirmation on H4. So वो confirmation कैसे मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो देखना होगा कि जो हमारा M15 का, क्योंकि ये आइडिया मेरा POI सिलेक्शन M15 होगा, राइट? इस केस में तो मैं डायरेक्टली H4 से कहीं ट्रेड नहीं लूंगा. आई विल टेक ट्रेड ओनली फ्रॉम M15. दिस इज द आइडिया ऑफ EU ट्रेड्स, राइट? डिस्टर्ब नहीं करना. बंद कर दो बेटा, क्या खा रहे हो? ठीक है, बंद करो. सो currently for me to see a sell, at least I need to see this too. This POI has to be mitigated first, then I can go towards the sell, because I will not take that directly trade. I have already taken a loss. मैं सेल देख रहा था, जो कि बहुत ही गलत शायद से वो सिनेरियो था, बिकॉज फ्रॉम दिस आई वॉज लुकिंग टू सेल. ओके, सो ये POI था that I can go towards directly sell, but as I have to be aware of that there is a Asia high, so मुझे वहाँ वेट करना चाहिए था, but unfortunately when I am on the phone, I am outside, I was doing something else, and that particular time I see the mitigation happen, and बहुत सारी मिस्टेक्स हुई. लाइक एक मिस्टेक ये हुई कि ये जो POI था, ये कम्प्लीटली फ्रेश POI नहीं था. इट वॉज नॉट अ फ्रेश POI, because as you know, next candle after bearish movement, it just mitigate, slightly mitigation happened, and what it did manage to do a internal break of structure. So what happened is that it might be this supply zone has done its job. So मुझे वो टाइम पे थोड़ा सा, आई मीन इफ आई एम एट होम फ्रंट ऑफ माई कंप्यूटर, आई माइट नॉट टेक दिस ट्रेड. बट सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? वी लर्न लेसन, राइट? सो मैंने वो जब वो टैपिंग हुआ, ये जब मिटिगेशन हुआ, एग्जैक्टली हियर मिटिगेशन हैपन, एंड आई गो टुवर्ड्स द M5, and I see this lid and very aggressive momentum to the downside, and I've set the stop order here, and price did tag me in, and after that it just push up and tag me out as well. So जब से वो completely मोमेंटम उसका अपवर्ड स्ट्रॉन्ग है, और चांसेस ये है, बिकॉज एज यू नो दिस H4 is too big, so there is a chance that it can go upside as well, at least up to the EQ of this whole range. मतलब there is a chance that it can go towards this. तो H4 में यहाँ तक जाना, that will be a very uh, good movement on M15 or M5. So M15 में I will just patiently wait. हाय सर, हाय. हाँ, आ गया, आ गया, आ गया. ओला, ओला आ गया. टाइम हो गया, जस्ट आते ही फ्रेश हुआ, और फ्रेश होकर बैठ गया. तो मैं यहाँ, एक तो दो चीज़ है,
Yes, overall swing structure is bearish, and I am price come to this length EQ, and there is a chance that it can dump anytime to the downside. मतलब ये मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर, राइट? सो अब ये EQ में आ गया, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, तो इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चाहे स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, we will see a pullback after that, right? So this will be my phase B2 trade if it happen. It will not phase B nahi, I can say this as my phase B, phase B2 nahi, I can say this as my phase B. So I need to see this fractal break first, and for this fractal break, after the fractal break, it might create a new fresh POI for me. Then only I will, when that mitigation happen with a new fresh created POI, then only I will take the entry. Otherwise, I don't. Yes, there is a high chance. What can happen is that it can push aggressively to the downside and never do a pullback like that I wanted. It just can do like slightly pullback and just dump. It can happen. So ऐसा होता है. I miss so many opportunities because of that. Can you analyze my trade which I posted on the Discord? Uh, just a second, I have to see that first. This trade ना, you you trade mostly on the phone. मेरे हिसाब से मैं एडवाइस करूँगा मत करो, बट लैपटॉप परचेस कर लो. फर्स्टली यू हैव टू टेल मी व्हाट यू सी. आपने क्या सोच के ट्रेड लिया ये? नो, किल जोन एंड एवरीथिंग वो मेरा क्या बोलते हैं, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है. मेरी एक्सपर्टीज मोस्टली मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड एंड लिक्विडिटी स्वीप है. किल जोन एंड एवरीथिंग नहीं है, वो आपकी है. सो you can tell me something about this trade so that we can discuss about it. I find this quite aggressive one, I guess. You said a limit order, right? Just tell me. So अभी वो POI क्रिएट नहीं हुआ है. आई होप मेरी आवाज़ आ रही है. 1 आवर इंटरनल, क्या है वो, IRL इंटरनल शायद लिक्विडिटी है या एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एंड 5 मिनट आवर ब्लॉक. माय फ्रेंड, मैं इस तरह ट्रेड करता नहीं हूँ, बट मेरा ये स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आई एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सच बताऊँ. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, बट आई मस्ट से क्योंकि what according to my strategy is that simply you see the break of this, and this is the liquidation that I use mostly for my trades. If there is a freshly demand or unmitigated POI here, you can take that entry directly. If it's a kill zone might be something like a London or something like Asia, ऐसा कुछ है ना. कोई ना सर, आप अपना एनालाइज शेयर कर दिए. मेरा एनालाइज मैंने ऑलरेडी शेयर किया अभी जस्ट. आई हैव टेकन अ लॉस. वैसे तो JPY में इट्स गोइंग ग्रेट. अभी तो जा रहा है ग्रेट, बट विल सी. होप इट नॉट रिवर्स. इसमें मैंने एक्सप्लेन किया अभी जस्ट. वापस से कर दूँ? ओके, मैं कर देता हूँ. राइट, देखो, स्विंग स्ट्रक्चर बेरिश था. हाँ, स्विंग स्ट्रक्चर बेरिश था, इंटरनल भी बेरिश था. सो उस टाइम पर आई वॉज लाइक आई हैव टू फॉलो द ऑर्डर फ्लो. सो देर इज only this unmitigated POI that I was thinking, but unfortunately 100K में execute किया है. GBP वाले ट्रेड को मैंने दोनों में एग्जीक्यूट किया था. अपने 100K में भी और लाइव अकाउंट में भी, दोनों ट्रेड को. एंड आई हैव टेकन अ लॉस. One loss, I've already taken it, and the second one is going great. I hope it will go towards the TP, but there is a high chance that when market come to this imbalance, it can push up, but it's coming very aggressively to the downside. There is no FVG after that. So if it break this one, and I will hold this trade a little longer, just waiting for, I will not close on 2 hour.
I will just wait for actually I can go up to like this, up to 4. I can go for this trade. Let's hope. So I'm talking about this one now. So ये मैंने वो फ़ोन पे लिया ट्रेड एंड आई हैव नॉट सीन जैसे मैं लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर बैठ के देखता हूँ वैसा नहीं देखा एंड सडनली ये तो ट्रेड मैंने अराउंड 1 PM को ले चुका था व्हेन आई लीव द होम एंड ये ट्रेड मैंने देखा सडनली यहाँ पर बट आई एक्चुअली ऑन माई फोन आई मिस दिस मिटिगेशन और ये मिटिगेशन ने क्या किया इट हैज़ अचीव द इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सो might be this supply zone has done its job. So why I take that trade? Lesson learned, simple. So I have see the sweep and I've take the stop order, take sales stop order, and I've taken a loss. Or abhi you just take a trade after this might be this sweep. You find this as your what you can call this as your kill zone or something, internal liquidity or what, high probability FPG. So so अब यहाँ पर एग्जैक्टली व्हाट आई नीड टू से इज दैट अब आपने जो भी सोच के लिया यू माइट थिंकिंग दैट यस अगर अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर भी जाओगे यू आर राइट बट यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट अ मिटिगेशन और आपके हिसाब से कुछ मिटिगेशन हुआ होगा बट आई डोंट नो फॉर मी आई नीड टू सी some kind of a mitigation of on my M15 POI. Okay, if it did not happen, so what I need a fractal break. So this is for me it's a fractal break. So अगर वो होता है then it give me a confirmation that I can go short from newly fresh POI created. So उसके बाद then I can look to sell to target this low. ऐसा मैं देख सकता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं है तो आई विल नॉट लुक टू सेल नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू बी हैपन ओके तो विल सी एग्जैक्टली 6:17 सॉरी गाइज आज थोड़ा सेशन छोटा होगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ मे बी 7 PM के बाद डाउन साइड मूव आएगा मैं यूरो यूएसडी में बाय करने वाला था लिक्विडिटी स्वीप के बाद पर उसे उस टाइम में कॉलेज में था ओके 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 हाँ हो सकता है something happen according to time as well time manipulation is the real thing so हो सकता है after 7 when the NY stock exchange or real volume kick in after 6:30 it can happen we never know because in between that what can also happen is that market slowly push up I'm talking about EU it's going slowly push up and just come towards the supply zone that I'm waiting and then it give me the entry and it's maybe around 7 p.m. and the volume it's like hefty volume so then it can dump you never know so अगर अगर ऐसा कुछ होता है तो you might take a loss I think I don't know if but one thing is important please do not move your stop loss ever ऐसा मैंने बहुत किया है you guys are experienced so वैसा कुछ करना नहीं आज मैंने एक पॉडकास्ट पोस्ट किया है अगर आप लोग डिस्कॉर्ड में एक्टिव हो मेरे तो आई जस्ट पोस्टेड दिस पॉडकास्ट ऑफ यू नो टाइटन्स ऑफ टुमारो इसमें जो ये ट्रेडर है फॉरेक्स ट्रेडर है बहुत अच्छा ट्रेड करता है सो बट जो साइकोलॉजिकल इशू ये फेस करता है लाइक सम टाइम मैं भी पहले नाइट में उठ कर के अपने ट्रेड्स को मैनेज करता था और वो अपनी स्लिप्स ख़राब करता था उस तरह की बातें कर रहे हैं और इसकी मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी
कि बैक टेस्टिंग से ज़्यादा ही फोकस ऑन मोर फॉरवर्ड टेस्टिंग। अगर मेरा यूट्यूब का आपने कोई वीडियो देखा होगा, आई मीन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट मार्केट टिप्स एंड एवरीथिंग, उसमें मैंने यही सेम चीज़ बात की थी कि क्या बोलते हैं, ज़्यादा फोकस आपका बैक टेस्टिंग में ना हो कि फॉरवर्ड टेस्टिंग में होना चाहिए। रीज़न इज़ सिंपल, जब आप फॉर बैक टेस्टिंग करते हो, क्या सेम मेरा भी यही लॉजिक है सेल का, बट डेमो था तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। अरे यार डेमो में क्या फ़र्क पड़ेगा, यही तो बात है। चलो कोई बात नहीं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग। सो तो अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि आप अवर्ली कैंडल को विद इन अ सेकेंड, जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन आप चेंज कर देते हो। बट जब व्हेन यू डू अ फॉरवर्ड टेस्टिंग लाइक वी ऑल ऑफ अस डू, लाइक जैसे कि स्लेयर ने अभी बताया डेमो था फ़र्क नहीं पड़ा, तो बट एटलीस्ट वो फ़र्क नहीं पड़ा, बट यू सी द मार्केट एट द सेम टाइम, यू नो कि जब अगर वो पैसा लगेगा तो हाउ योर इमोशन कैन गो फॉर इट। ओके, so that's why I always recommended people to do more forward testing. If you are doing, if you are creating your creating a new strategy, if you're creating new strategy or you're doing कोई नया strategy आप learn किए हो, then you can do for 1 or 2 month, max to max 2 month। fractal break market structure shift एक ही होता है क्या? हाँ, yes, yes, it's same, fractal break and market structure shift is the same thing। सबका अपना अपना कहना है। आईसीटी भी, जो जो शायद आपने आई आर एल ई आर एल बोला है, वो हो सकता है मे बी मेरे कॉन्सेप्ट में होगा, बट नेम डिफरेंट हो सकता है ना। तो यस, फ्रैक्टल ब्रेक दैट मीन्स चॉच दैट आई, जैसे आप लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर बुलिश मार्केट है और सडनली वो बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो यू गाइस कॉल दैट एज अ चॉच, चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट? बट आई डिडंट कॉल दिस एज माई चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही छोटा सा सिंपल सा एक इनिशियल साइन है बस। तो वो आप उसको यू कैन कंपेयर दिस एज योर मार्केट शिफ्ट। व्हाट्स अ फॉरवर्ड टेस्टिंग? फॉरवर्ड टेस्टिंग इज नथिंग दैट, इट्स अ सिंपल थिंग। जैसे कि अभी यू कैन अफोर्ड अ 5K चैलेंज, राइट? लाइक अ $17 or $20, instead of putting your all money on a simple $20 account on live, instead of that you have to purchase the demo account of prop firm and try to do each and every day same thing for rest 1 or 1.5 year or 6 months। ऐसा करते जाओ एंड सिट ऑन द कंप्यूटर द सेम टाइम, लैपटॉप को सेम टाइम पे बंद करो, चीज़ें सेम करते जाओ, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड टेस्टिंग। वो ज़्यादा उस पर फोकस करो तो वो बेटर होता है। तो मेरे हिसाब से वो हमेशा अच्छा होता है एंड आई मोस्टली इनक्रेज दैट। मैं ज़्यादातर इंकरेज वही करता हूँ फॉर मोस्ट पीपल। सेशन विल बी शॉर्टर टुडे। मैं सोच रहा हूँ कि बाय क्या बाय कर लूँ 5K का। इट्स योर विश। with 80% spread. Yes, it is very cheap now. You can do that on God funded. It's very cheap now, 17K itself. So you can use that, and you can use my affiliate as well if you want to, but no issue। कर लो और ट्राई करो। अब डेमो से थोड़ा सा हटो, क्योंकि डेमो में आपको वो इमोशनल और वो जो है ना, नहीं मिलेगा, एटलीस्ट अभी तो नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से you can purchase that out। सॉरी मैं अगर ज़्यादा मूव कर रहा हूँ, असल में ऐसी इसको लेके बहुत शिकायत है सर, ज़्यादा मूव नहीं करने का। बस क्या करूँ, मुझे सेकंड स्क्रीन में देखना होता है कि चैट्स देखने होते हैं, और हाउ आई एम लुकिंग, आई मीन सेम चीज़ में
अपने स्क्रीन पे नहीं देख पाता हूँ, बट वहाँ देखकर मुझे इतना समझ में आता है दैट आई हैव टू बी स्ट्रेट और आई हैव टू बी लाइक डोंट टिल्ट एंड आई एम लूजिंग द कनेक्शन एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई सेकंड स्क्रीन वहाँ बहुत काम आती है, इसके लिए मैं थोड़ा सा yes, it's a high chance that after mitigation of this imbalance, market can push up aggressively to the upside and Slayer. Slayer. यार you guys, मेरे हिसाब से ना, when you say Ola, when you say I'm back, you just put your real name there, मुझे ना वो याद करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा. Just put your name. Hi sir, I'm Atik. Hi sir, I'm back. या फिर hello sir. नाम से याद रहोगे तुम लोग बहुत अच्छी तरह से. ये जो अजीब अजीब से नाम है, स्लेयर है और मैस्कुलाइन है और बायो है, बोयो है, यार जस्ट नाम याद रहेगा तो अच्छा है. इट्स माय सजेशन, अगर यू कैन डू दैट तो अच्छा है, अदरवाइज नो इशू. नाम याद रहना चाहिए. लाइक मेरा नाम नाइटमैन नहीं है, माय नेम इज मोहम्मद अली, तो नाइटमैन तो जैसा कि I mean reverse, not hit SL, man. What is this? Just reverse. Session will be shorter, so 50% split. 6:30 by this candle close. After that I will close the session बिकॉज आज थोड़ा सा लेट था और सेशन तो करना ही है. वो चीज़ एक हैबिट है, आप लोगों से मिलना है, कम्युनिकेट करना है, डिस्कस करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही कोई चीज़ आपको ज्ञान दे पाता हूँ. आई एम ऑल्सो गेटिंग so much knowledge from you guys as well. So that's why I love to come live every day, at least during the session. इससे पहले मैंने प्लान किया था कि that whole session I will be live, like if I'm trading an London session, I will be whole session I will be live, but it is like, I must say it is like, not possible. So issue with एक चीज़ और, new fractal POI has created. So when this break happened, it created a new fractal zone for me. So this is a new church, I must say. So this for me a market shift, जैसा कि आप लोग बोलते हो. वो होने के बाद I have to look for a new POI to look for sell, and the rest we'll see.
um, so I think I have to close now. So guys, बंद करते हैं। बस समझो मैंने ऐसा हुआ कि मैंने लंदन देखा, उसके बाद आई कुड नॉट सी द चार्ट्स ड्यूरिंग द लंदन सेशन आफ्टर दैट। सो अभी मैंने आप लोगों के साथ एनालाइज किया फॉर जस्ट नथिंग। सो चलो मिलते हैं स्लेयर स्प्लाइन बोई ओला ओला। चलो बाय बाय, विल मीट यू टुमारो गाइस, ओके, होप विद द राइट टाइम आई विल बी देयर। सो कोई है बाय करने को? नहीं है तो फिर ऐसे ही बाय कर देते हैं हम लोग। चलो हाँ, बाय बाय गाइस, बाय। वेटिंग फॉर समथिंग बट चलो कुछ नहीं। चलो बाय गाइस, हाँ ये पॉडकास्ट ज़रूर सुनना, इट इज़ इंटरेस्टिंग। मोटिवेशनल कोट जाते जाते बोल देते हैं आज का। दे लाफ एट यू व्हेन यू गेन $300 a month. They call you lucky when you gain a $7,000 per month 5 years after. Time लगता है, some people can get this on 2 years, some people get it 5, some of them is like 10 years. So सब अपने पेज में जाते हैं, but yes, when you succeed they will call you just a lucky. चलो बाय, बाय बाय, टेक केयर।